So hello everyone. So तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पार्ट जो कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब तक हमने देख लिया था कुछ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल। Also we have studied about the chemical reaction that is CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu. We have seen the different types of the that what are the reactants, what are the products, how they are represented, then how the reactants when combined two or more. So how they are represented and written in a chemical reaction. Then what is the significance of the different arrows, that arrow pointing towards upward, downward, precipitate representation. Then if the element or the reactant taking part in the chemical reaction is aqueous or whether it's in the solid state, liquid state and all. So these all we have studied earlier. So now we have to think about the next part. I will zoom in. So हाँ, अभी हम देखने जा रहे हैं एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, जिसमें बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत ज्यादा गलतियां होती है। सो वी हैव टू ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। सो उसके लिए हमें बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन ये प्रॉपरली समझ लेना है और कैसे बैलेंस करते हैं एक रिएक्शन को, दैट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। देन इट इज बिकम्स सो सिंपल फॉर द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सबसे आसान टॉपिक अगर है तो ये है, लेकिन समझ लिया जाए तो आसान है। अगर समझा नहीं ठीक से तो then that will be the creating a huge problem, as in the balancing a chemical equation is the major part. Later we will you will study about the stoichiometry and all. So balancing a chemical equation plays a important role in all the aspects of the chemistry. So चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं बैलेंस रिएक्शन को। कंप्लीट द टेबल असाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन 9। सो इक्वेशन 9 जो कि हमने यहाँ पर देखी थी, this is the equation 9. That is AgNO3, that is the silver nitrate, NaCl aqueous, when combined gives AgCl, that is silver chloride, and NaNO3, that is the sodium nitrate. So this we have seen the chemical reaction. So क्या कहते हैं वो? So complete the table aside on the basis of the equation 9. मतलब equation 9 जो हमने देखी थी तो उसके बेसिस पर हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। रिएक्टेंट्स वी हैव गिवन दैट इज द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स वी आर गिवन दैट इज द राइट साइड। So here are the names of the elements that are taking part in this particular chemical reaction. Then reactants number of atoms and product number of atoms we have to write down in this table. तो चलिए देखते हैं। So we will also write down regarding that. So as we can see here that silver on the reactant side 1 is there. So number of atoms of the silver will be 1. Then number of the रिएक्टेंट्स ऑफ नाइट्रोजन के कितने एटम्स है? सो नाइट्रोजन एक ही है। वी हैव टू कंसिडर दिस साइड एज वी आर थिंकिंग अबाउट द रिएक्टेंट्स। सो नाइट्रोजन यहाँ पर हम देख सकते हैं नाइट्रोजन इज 1। सो नाइट्रोजन विल बी हियर 1। देन वी हैव आस्क्ड अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 है। सो ऑक्सीजन विल बी 3। देन वी हैव आस्क्ड अबाउट द सोडियम। सोडियम तो सोडियम यहाँ पर एक ही है। सोडियम एक है। देन क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर देख सकते हैं Cl इज ऑल्सो हियर 1। सो वी हैव टू ऑल्सो लुक अबाउट द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट कितने हैं? प्रोडक्ट ऑल्सो सेम, दैट इज सिल्वर। हाउ मेनी सिल्वर atoms are there in the product side? Silver also we can see here, silver is 1। then we can see that we have asked about the nitrogen। nitrogen कितने हैं? nitrogen भी एक ही है। so nitrogen again 1। then we have to see about the oxygen, that is oxygen 3। Then we have to think about the sodium, sodium का एक है, and chlorine, so chlorine एक है। So अगर what inference we can draw from this table? So हम देख सकते हैं कि सिल्वर 1 1 है, नाइट्रोजन 1 1, ऑक्सीजन
3, 3. Sodium, 1, 1. Chlorine, it's also 1 and 1. सो ओवरऑल जो इन्फ्रेंस है, अगर हम इससे ड्रॉ करें तो क्या हम देख सकते हैं, क्या ईच एंड एवरी एटम हियर इज बैलेंस्ड, दैट मीन्स if we consider all that metals and non-metals also with the oxygen and all, so each and every element on the reactant and the product side is completely balanced. So it is seen that the number of the atoms of the elements in the reactant is the in this equation is the same as the number of the atoms of those elements in the products. मतलब जो रिएक्टेंट में जितने नंबर्स ऑफ द एटम्स जो रिएक्टेंट साइड में रिएक्शन केमिकल इक्वेशन जो 9 हमने देखी थी, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने प्रेजेंट है उतने ही राइट हैंड साइड में भी है. सो सच a equation is called as a balanced equation और इसी इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है. If the number of the atoms of each element is not the same on the two element sides of an equation, it is called as an unbalanced equation. मतलब अगर जो रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है एक पर्टिकुलर एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के अगर वो बैलेंस नहीं अगर सेम नहीं होंगे, then that equation we called as a unbalanced equation. Always remember, में क्या कहा गया है देखते हैं. In any reaction, the total mass of each of the element in the reactant is the same as the total mass of each of the respective elements in the product. ये जो है, as we have studied in the lower class, that in the ninth class only, about that the law of conservation of the mass. So we have studied that the mass remains constant everywhere. So the if we calculate the atomic mass of all this means the part of the reactant which are taking place in the chemical reaction, if we calculate the atomic mass of these two reactants, and if we also calculate the atomic masses of the product side elements, then we can see that the atomic mass of reactant and the products are same. So here we can see that the atomic mass is calculated, that is 300.23 gram, and the same of that is calculated, that is 300.23 gram. As we can see that here, the atomic mass of the reactant and atomic mass of the product, both are the same. That means it follows the law of conservation of the mass. So now let's see forward. In any reaction, the total mass of each of the element in the reactant is same as the total mass of each of the respective element in the product. This is in accordance with the law of conservation of mass that you studied in the previous standard. That's that only that I have told you already about this law of conservation of the mass. स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो क्या स्टेप्स है कि बैलेंस कर सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन को. So, a chemical equation is a balanced step by step. A trial and error method is used for this purpose. मतलब जो trial and error method है, that we are using for balancing a chemical reaction. Consider the following equation as an example. तो हमें एक इक्वेशन दी है यहाँ पर, जैसा कि हमने देखा था, there is the word equation and the chemical equation. So, if the equation which is represented in the form of the words, that is, here we have seen that it is called as a word equation. And when it is written in the form of using the elements symbols, then that is called as the chemical equation. This we have already studied previously. So a chemical equation is balanced by step trial and error method is used. Consider the equation. We have given the equation in the word equation format. Sodium hydroxide plus sulfuric acid gives sodium sulfate plus water. The write a chemical equation from the word given word equation. अगर हमें word equation दी होगी तो हमें उसकी chemical equation लिखनी है. So we are writing down the chemical equation. Sodium hydroxide, as we know that it is NaOH, sulfuric acid, that is H2SO4. When combines, that means we have to add these two reactants, then gives sodium sulfate, that is Na2SO4, and water, that is H2O. Now step 2. Check whether the equation 10 is balanced or not by comparing the number of atoms of the various elements present in the two sides of this equation. So we have to compare. Again, we have to make this table, as this table is important, as basically while starting from the base for balancing a chemical reaction. So it is necessary that we should try to make this such a kind of the table. Then that is the simple one. We have to take the element, then reactant left side number of atoms, product right side number of atoms. So we have to consider only these two parameters.
तो वैसे ही यहाँ पर हमें एलिमेंट्स लिखने हैं जो भी हमें रिएक्शन में दिख रहे हैं, दैट इज सोडियम वी कैन सी हियर, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन एंड सल्फर. Other than this, no elements is present in the chemical equation, so we have to write down only those elements which are present having in our chemical equation. So we have to see the reactant side number of atoms of the sodium. कितने दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक. तो एक यहाँ पर लिखा है. सो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सोडियम दो है, तो दो लिखे. देन वी हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक और चार, पांच है. यहाँ पर चार और एक, पांच. देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर एक और दो, तीन. और यहाँ पर हाइड्रोजन है दो. और सल्फर यहाँ पर एक है, और सल्फर यहाँ पर भी एक है. So it is seen that the number of the atoms of all the elements on the two sides are not the same. जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे एलिमेंट सेम नहीं. Means we can say that sulfur is balanced. Then we can say that oxygen is also balanced, but sodium and hydrogen is not balanced. It means that the equation is not 10 is not balanced. मतलब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है. So step 3 क्या है? It is convenient to start balancing an equation from the compound which contains the maximum number of atoms. मतलब कि हमें उस एलिमेंट को बैलेंस करने का सबसे पहले स्टार्ट करना है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमें उस केमिकल रिएक्शन में दिख रहे हैं. मोreover it is convenient to first consider the element in this compound which has unequal number of atoms on the two sides. तो सबसे पहले हम एलिमेंट लेंगे जिसके अनबैलेंस्ड है. सो एलिमेंट कौन सा है? इनिशियली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिमेंट दैट इज सोडियम इज द एलिमेंट which we are considering here. In the equation 10, there are the two components Na2SO4 and H2SO4, which contain the maximum number, that is the 7 atoms each. मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो सोडियम के, एक सल्फर एंड चार ऑक्सीजन, चार, पांच, छह, सात. सात इसमें, चार, पांच, छह, सात, सात एटम्स ईच इस कंपाउंड में यहाँ पर हम देख सकते हैं. सो एनी वन ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड. सिलेक्ट द कंपाउंड Na2SO4. तो इन दोनों में से कौन सा भी एक सिलेक्ट करना है. सो वी आर सिलेक्टिंग द Na2SO4. Further, select sodium for balancing as the number of atoms of the sodium in this compound is unequal on the two sides. It should be remembered that the formula of a compound cannot be changed while balancing the number of atoms. और हमें ये ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड का चेंज नहीं होना चाहिए. एज वी कैन सी दैट वी हैव स्टडीड that what are the compounds. So compounds are basically when two or more elements combine chemically in a fixed proportion. मतलब अगर fixed proportion में होंगे elements, then that only we can call it as the compound. अगर fixed proportion में नहीं होंगे, so we cannot say it as a compound, so it can be called as a mixture. जैसा कि हमने देखा है कि mixture is that when two or more elements combine chemically in any proportion, then the mixture is formed. But we have to think about here the compounds only. So आगे देखते हैं. It means that here to make the number of the sodium atoms in the reactant as 2, the formula NaOH cannot be changed to Na2OH. मतलब as जैसा कि हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड is having the formula that is NaOH. तो हमें NaOH का फॉर्मूला नहीं चेंज करना है. Basically we have to change the molecule number. So we have to change, think about with the perspective of the stoichiometry. Instead of a factor of the two, we will not will have to apply to NaOH. Write down the resulting equation 10 on doing this. So यहाँ पर Na2 मतलब ये फॉर्मूला चेंज करने की बजाय अगर हम 2 यहाँ पर लगा दें तो NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो सोडियम के एटम्स यहाँ पर मिल गए. यहाँ पर भी दो सोडियम के. That means sodium is completely balanced in this chemical reaction of the equation 10. So check whether the equation 10 dash is balanced or not. We find that equation 10 dash is not balanced. तो ये क्यों बैलेंस नहीं है? देखते हैं. सोडियम दो, दो सोडियम हो गए, दो ऑक्सीजन. अब ये टू जो है ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा. दैट मीन्स टू ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन दो और चार, छह हो गए. और यहाँ पर चार और एक, पांच है. दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है इस केमिकल इक्वेशन में. सो थिंक अबाउट द अदर एटम्स ऑल्सो. अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन दो और दो चार, और यहाँ पर सिर्फ दो है. दैट मीन्स हाइड्रोजन चार और दो, हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉट बैलेंस. सल्फर देखते हैं, सल्फर एक, सल्फर एक, सल्फर इज बैलेंस. सो आगे हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है. सो दैट ओनली
we have given here about that, and we have infer write down this table about what conclusion we have drawn from this equation 10 dash. So अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि we find the equation 10 dash is not balanced as the number of oxygen and hydrogen atoms are unequal on the two sides. First balance the hydrogen number as it requires a smaller factor. तो हाइड्रोजन का हमें सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा. As तो applying a factor 2 to the product of the H2O for balancing the equation 10. Now write down the 10 double dash, that is 2NaOH plus H2SO4 Na2SO4 2H2O. अभी इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि क्या सारे एलिमेंट्स बैलेंस है. सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू बैलेंस द हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन यहाँ पर दो, और बस यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर चार हाइड्रोजन है. दैट अगेन कॉस्ट एंड इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन चेक whether the equation 10 double dash is balanced or not. Clearly it is seen that it is not balanced. It is seen that the नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट हाइड्रोजन इज गॉट बैलेंस. हाइड्रोजन यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, चार हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन हो गए. दैट मीन्स हाइड्रोजन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इन द इक्वेशन. सो एक बार देख लेते, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन अगेन. तो एक बार फिर से देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है या ना. सो दो सोडियम बैलेंस्ड, दो ऑक्सीजन प्लस चार ऑक्सीजन, छह ऑक्सीजन, चार और यहाँ पर दो, छह ऑक्सीजन बैलेंस्ड. हाइड्रोजन दो और हाइड्रोजन दो, चार, यहाँ पर चार हाइड्रोजन, सल्फर एक और यहाँ पर सल्फर एक. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड एज वी कैन फॉलो दिस बेसिकली फोर स्टेप्स. जैसा कि ये बहुत मतलब लेंथी स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन सिंपल है. फर्स्टली वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द कंपाउंड. पहले मतलब जो वर्ड इक्वेशन दिए उसको केमिकल इक्वेशन में लिख लेना है. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. देन we have to write down this table by comparing that how many number of the atoms of the reactant elements are present in the reactant side and also in the product side. वो दोनों बातें लिखने के बाद ये टेबल जैसे कि हमें मिल जाता है. क्लियरली इट इज विजिबल फ्रॉम द टेबल दैट इफ द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. अगर बैलेंस नहीं है, सो वी हैव टू कंसिडर द कंपाउंड विच इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. मतलब हमें ऐसा एक कंपाउंड सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. जैसा कि हमने Na2SO4 H2SO4 इसमें देखा. सो इट बेसिकली कंटेन्स maximum number of the atoms, that is oxygen 4, 5, 6, 7, that is the 7, and try to balance the chemical reaction from the perspective of this. So it will become easy for also balancing this kind of the chemical equation. Till now, if you are having any doubt, then you can also comment in the live chat. So I will be answer your chat. So आगे देखते हैं. So as now here we have got the chemical reaction which is completely got balanced. अभी तक आपको अगर कोई भी इसमें डाउट होगा, means each and every step we should have to get it clear understanding for the balancing of the chemical reaction. That from the exam perspective तो ये बहुत important है, लेकिन we should have to think it is also increasing our the logical thinking that how to we can use that a particular factor for the balancing the chemical equation, that which number should be multiplied. That is also increasing our the logical thinking power also. So we have to also think with the perspective of that also, and we have to try to balance the chemical equation. And this is also more important that in the exam, it also the one of the important question that gets asked to balance a chemical equation. मतलब आपको एक वर्ड इक्वेशन देंगे या आपको एक केमिकल इक्वेशन देंगे और आपको बोलेंगे कि बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन विद द प्रॉपर एप्रोप्रिएट जो भी होगा, मतलब यहाँ पर हमने जो नंबर यूज किए, जो फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, that also they may ask in the fill in the blanks or the we are having the activity for completing. So we have to also think about with the all perspective. Use your brain power. तो चलिए आगे देखते हैं. Identify the reactants and the products of the equation. Write down the steps in balancing the equation. अभी ये जो रिएक्शन दी है, तो now we will try to balance this equation. तो यहाँ पर
सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, दिस इज द सिंपल रिएक्शन when N2 that is the gaseous state when combines with the hydrogen that is the gaseous state leads to the formation of the ammonia gas that is NH3। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पर ही देख सकते हैं हम कि रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। सो वी हैव टू टेक द कंसिडर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स का जो मतलब एटम्स का जो कंपाउंड है वो। दैट मीन्स हियर वी कैन सी यहाँ पर भी दो है एटम्स और यहाँ पर भी दो है। सो वी कैन टेक एनी। हाइड्रोजन भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है क्या नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, हाइड्रोजन यहाँ पर तीन है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली बैलेंस्ड। तो ऐसा क्या फैक्टर है कि जिससे हम अगर मल्टीप्लाई करें सो द रिएक्शन विल गेट बैलेंस्ड। सो इन द ब्लैंक स्पेस आई विल राइट डाउन दिस केमिकल इक्वेशन। एक काम करते हैं यही पर वी विल ट्राई टू बैलेंस इट रिएक्शन। सो अगर यहाँ पर दो है नाइट्रोजन, सो आसानी सी बात है यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन होने चाहिए। सो आई विल राइट डाउन टू हियर। अगर मैंने दो यहाँ पर लगा दिया मतलब दो यहाँ पर लिखने के बाद दो नाइट्रोजन हो गए, दो नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रोजन इज कम्प्लीटली बैलेंस, वी कैन सी दिस रिएक्शन। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए? सो दैट वी हैव टू सी। हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, हाइड्रोजन यहाँ पर छह हो गए। सो यहाँ पर छह हाइड्रोजन हो गए। सो आई ऑल्सो वांट द सिक्स हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो लिखने के बाद मतलब जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर छह हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर भी छह हाइड्रोजन जो कि है। सो इफ आई मल्टीप्लाई हियर विद द थ्री, सो तीन दूने छह, तो यहाँ पर छह हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी छह हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर दो नाइट्रोजन, यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कम्प्लीटली व्हाट बैलेंस। सो क्या फैक्टर निकले जो स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर जो निकले? सो थ्री और यहाँ पर टू, मतलब 3H2 लिखा और 2NH3। इन दिस सिंपल वे वी कैन एबल टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही हमें सोचना पड़ेगा कि बैलेंस कैसे किया कर सकते हैं हम। सो वी आर हैविंग द अगेन the reaction calcium chloride plus sulfuric acid gives calcium sulfate plus hydrogen chloride. So this is the reaction. You have to write down this, and also you can comment the stoichiometric factors which will be coming. So to balance this reaction. So that answer you can give in the live chat also and in the comment box also. Regarding this, आपको क्या करना है? इसका जो है मतलब ये जो वर्ड इक्वेशन दी है तो इसकी केमिकल इक्वेशन लिखो। Then simply make this chart of the element, reactant and product side. Try to identify whether each element is balanced or not, or try to think upon that steps, following all these steps, that four steps which we have seen in the balancing a chemical reaction, and also you can answer that question. Write down the physical states of the reactants and the products in the following reaction. This is the again one of the question, जैसा कि हमने सब यहाँ पर देखे थे, जो कि these rules which we have seen, that arrow pointing upwards showing the gaseous state, downwards that is the precipitate formation. Try to answer this question. If you are not able to get the answer to this question, then comment. I will try to help you. We saw that in the chemical reaction, reactants get converted into the new substances called as the products. During the some chemical bond in the reactant break and some new chemical bonds are formed so as to transform the reactants into the product. तो जैसा कि हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन कब ऑकर होती है, वी हैव सीन अबाउट द टू टाइप्स ऑफ द चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है कि जिसमें जो हमारी स्टेट है प्रोडक्ट की, वो आफ्टर सम ड्यूरेशन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द अनदर स्टेट, और जब हम रिवर्स बैक करते हैं सो इट गेट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू द सेम ओरिजिनल स्टेट। दैट इज द फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज विच वी कैन सी। बट केमिकल रिएक्शन कब होती है? जब टोटल जो उसके सब्स्टिट्यूएंट्स के जो
मतलब जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट चेंज हो जाती है। एज वी कैन सी, वन एग्जांपल आई वांट टू गिव हियर। जो आम होता है, तो सबसे पहले केरी होता है। तो केरी के इसमें वो राइपन मैंगो जो होता है, सो दैट टेस्ट डिफरेंट। बट जब वो आम बन जाता है, that when that it's get converted into the sucrose, which sugar is present in the mango. So after the conversion of the ripe mango into the, मतलब वो पूरा पक जाता है, so at that time we can see that it is having the sour taste, but it is having the, that is the sweet taste in the mango. So in this case, this is, we can say that it is a chemical change that has taken place, and there is some chemical reaction occurring in between this. So ऊपर हमने बहुत सारे reaction भी देखे थे. So we saw that in the chemical reaction, reactants get converted into the new substances called as the products. During this, some chemical bond in the reactants break, and some new chemical bond are formed so as to transform the reactants into the product. This in this chapter we will be studying the type of the chemical reaction in detail. So अब तक हमने तो देख लिया था रिएक्शन के टाइप्स। रिएक्शन के टाइप्स नहीं, मतलब फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस। अभी हमें आगे देखने हैं रिएक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स है उनके बारे में हमें देखना है। सो वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सो we will try to cover it. But till now, if you are having any doubt, then definitely ask the doubts and all, and try to clear all the doubts. As in the further chapters also, we are requiring the knowledge of all these chapters, or all the things which we are studying here. तो आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें भी ये थ्योरी जो है, जो कंसेप्ट है, वो तो लगने ही वाले। सो ट्राई टू आंसर, try to get your doubts get solved, and try to ask the questions also. You can ask in the live chat also, and also in the comment box. So types of the chemical reaction, if we can see here, chemical reactions are classified into the following four types in accordance with the nature and the number of reactants and the product. मतलब केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया है फोर डिफरेंट टाइप्स में। तो किसके बेसिस पे? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन विच गेट आस्क्ड। इट, we are classifying it according accordance with the nature and the number of reactants or the products that are taking place in the chemical reaction. So we can see here the combination reaction. So सबसे पहली जो reaction है combination reaction. Again we are having one activity here. So activity you will be performing in your the school lab. So we are not going to take the activities here, but we are going to cover all the other stuff, that is reaction, chemical reaction, and all other part. So due to heating, HCl vapor started coming out from the test tube, and ammonia, that is NH3 gas, came out from the solution on the glass rod. The ammonia gas and hydrogen chloride gas reacted to form the salt ammonium chloride. तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिया है, सो वो परफॉर्म करने के बाद हमें अमोनिया गैस एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि ग्लास रॉड पे। एंड अमोनिया गैस व्हेन रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन क्लोराइड, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड इन द gaseous state first. But immediately due to the condensation process at the room temperature, it got transformed into the solid state. As a result, white smoke was formed. The chemical reaction, we can write it as ammonia when reacted with the hydrogen chloride forms ammonium chloride. Ammonia when react with hydrogen chloride, ammonium chloride is formed. NH3 gaseous when combined with HCl gaseous forms NH4Cl. So again we can also try to balance this reaction. Let's see, अगर बैलेंसिंग पढ़ा है, सो बैलेंसिंग यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं। नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन तीन और एक चार, हाइड्रोजन चार, एंड क्लोरीन वन। Again, gaseous state written properly. If you are writing the proper, if you want to get the good marks and all, so try to write down the chemical reaction with their states in which they are present. ये मतलब जब आप रिएक्शन परफॉर्म करोगे, जब आप बार बार लिख कर देखोगे, सो एट दैट ऑब्वियसली एट दैट मोमेंट यू विल बी एबल टू also remember this reaction, and don't need to remember the again and again. As we can practice it 2 to 3 times, you will be able to remember it for the long duration. Activity 2A, hold a magnesium strip in a pair of the tongs and ignite. On burning in air, a white powder of the magnesium oxide is formed. The reaction can be written.
When magnesium reacts with oxygen, gives magnesium oxide. Two magnesium, oxygen O2, 2O2. Balanced reaction. In this reaction, magnesium oxide is formed as a single product by combination of the magnesium and oxygen. So यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं that what inference we are going to draw from all these reactions that we will be seeing further, but we can see here that the two reactants get combined to form the single product. Two reactants get combined to form the single product. Two reactants get combined to form the single product. This we can see here. When we are having the third equation, take water in a beaker up to half of its capacity, add a few pieces of the slake lime, calcium oxide CaO to it. Calcium hydroxide CaOH2 is formed by the combination of calcium oxide and water with the generation of the large amount of heat. This is a simple reaction, that is the calcium oxide हमें लेना है, पानी में डालना है, calcium hydroxide फॉर्म होंगी और heat रिलीज होगी. This is also when two or more elements in the two or more reactants are getting combined in the reactant side, product is forming. So what is the number of the reactants in each of the above reactions? यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है. What is the number of the molecules of the reactants taking part in the above reaction? Molecules we can see two, then two molecules, here one molecule of each. How many products are formed in each of the following reaction? एक product मिला, एक product, एक product. This is all the conclusion which we have drawn from this. So, क्या है? When two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is a combination reaction. So, जब दो और दो से ज्यादा reactant combine होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देन दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाम में ही हमें पता चलता है कि कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन. We are combining the two or more reactants to forming the single product, then that types of the reaction is called as a combination reaction. This is clear. So next is the decomposition reaction. Decomposition नाम से ही पता चल रहा है decompose मतलब break down होगा. So let's see. Apparatus. This is all about the take some sugar in a evaporating dish, heat it with the help of the Bunsen burner. After some time, you will see the formation of the burnt out see black substance. Exactly what must have happened in this activity. In the activity, a single reactant sugar is divided into two substances, carbon and hydrogen. मतलब sugar जिसका की formula है C12H22O11 when heated leads to formation of carbon and water. दिस इज द सिंपल रिएक्शन. शुगर है, जो शुगर हमने एक इवेपोरेटिंग डिश में ली है और उसको हमने हीट किया. तो हीट करने के बाद देर इज अ सेपरेशन ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन एंड द वाटर. मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो रहे हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट. दिस इज ऑल्सो बैलेंस. 12 carbon, 22 hydrogen, 22, 11 oxygen, balanced reaction. This reaction in which there is only one reactant giving rise to or two or more products, it is called as a decomposition reaction. Combination reaction क्या थी? When two or more elements combine, two or more reactants combine to form a single product, combination reaction. When one single reactant leads to the formation of the two different products, two different compounds, then that is called as the decomposition reaction. Simple. Again, we are having the different experiments, that these all experiments you will be performing in your school lab. So I will be more focusing on how these chemical reactions are written and how these chemical reactions are taking place and how they are balanced. That is the major part. So we saw in the above activity that the calcium carbonate undergoes decomposition reaction and carbon dioxide gas is formed, which turns out to be the lime water milky. The second product of the reaction, that is the calcium oxide powder, remains behind in the first test tube. Similarly, in another reaction, hydrogen peroxide naturally undergoes slow decomposition into the water and oxygen. यहाँ पर साधारण सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है जो कि सॉलिड फॉर्म में, उसको हीट प्रोवाइड की. So there is a formation of calcium oxide, solid, and carbon dioxide is released. So आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो H2O2 है, तो उसकी रिएक्शन है when leads to the formation of the two molecules of H2O plus O2. So 16 and 17 both are the decomposition reaction. As we can see clearly, one reactant leads to the formation of the two products. One reactant leads to the formation of two or more products. This is basically the decomposition reaction.
So also we have studied in the previous standard that water decomposes into the hydrogen and oxygen gas on passing the electric current through acidulated water. This decomposition takes place by means of electrical energy. Therefore, it is called as the electrolysis. So हमने स्टडी किया था कि हाइड्रोजन जो कि वाटर है, वाटर अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का, सो after that hydrogen and oxygen gas get separated. So here also one reactant two products are forming the chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called as a decomposition reaction. So many degradation process takes place in the nature surrounding us. Organic waste is decomposed by microorganisms and the result manure and biogas are formed. Biogas is used as a fuel. So this is for the kind information. Later we will see in the further part about the displacement reaction and all. So the major part of the today's lecture is about the balancing the chemical reaction and we have studied about the two types of the chemical reaction that is the combination reaction and decomposition reaction. एक बार रिवाइज कर लेंगे. Combination reaction is reaction when two or more reactants combine in a reaction to form a single product. Combination reaction when a single reactant gets leads to the formation of the two or more products, then that is called as a decomposition reaction. Till now, if you are having any doubt, then you can ask. अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं चैट में, लाइव चैट में भी और कमेंट भी कर सकते हैं. And again, one more thing, try to get your doubt means clearly clarified with the proper solution and answer because this is all important with the perspective of your further studies also and also with the further chapter study. And if you like the video or the content, then do like, share, and subscribe. And also try to comment. Also, you can comment the activity about the activities also or the task which I have told you to perform for the balancing. Try to take the different chemical reactions also. Not only this, they are given the balance. मतलब यहाँ पर जो बैलेंस दी है वही यूज करनी है. ट्राई टू फाइंड आउट द मतलब रिएक्शन आप पिछले जो लोअर क्लासेस में जो रिएक्शन पढ़े हैं, तो दैट आल्सो यू कैन कंसिडर एंड ट्राई बैलेंसिंग ऑन योर ओन. जब तक आप खुद से नहीं कर पाओगे, मतलब खुद से ट्राई नहीं करोगे कि बैलेंस करने के रिएक्शन को, देन द कंसेप्ट विल नॉट बी गेटिंग क्लियर टू यू regarding that. So try to balance the reaction as many as you can possible. And also you can comment in the chat box about if you are having any doubt regarding any balancing of the chemical reaction and all. Then I will be taking that doubts also in the next part. So we will stop here. So thank